by listening to this, because you cared about this country, because you put the country first, you have to suffer. We are going to reduce your representation. Uttar Pradesh's population has grown by 120% since 1971. Tamil Nadu's only by 15%. And contrary to what the Home Minister said yesterday, Clause 4 of the delimitation bill clearly states that the allocations of seats will be on the basis of the latest census figures. The Home Minister says one thing, the bill says another thing. Now, the latest available census is 2011. But again, according to the 2011 formula, UP gains 13 seats. Tamil Nadu loses 11 seats. But the Home Minister yesterday told us that by increasing 50%, Tamil Nadu will gain 39 seats, and which has 39 seats will gain 59. Sir, our ideological leader Periyar taught us, justice is not giving every person the same thing. Justice is giving every person what they need and what they deserve. But unfortunately, your government thinks what it needs and what it deserves is what the whole nation deserves and what the whole nation needs. Other than this, let me state two critical legal issues present in the bill. The Constitution bill says that the delimitation will be based on such census as Parliament may by law determine. This is vague and leaves everything open. This literally means that whichever party has a majority in Parliament gets to decide which census it is used to draw the electoral map of this country. Today, you might choose 2011. Tomorrow, you can choose 31. And day after, it can be 1991. This shows a non-application of mind or a mind determined to push its own agenda on this country. Second, the Delimitation Commission will be chaired by a retired Supreme Court judge, appointed entirely by the Union government, with no consultation with the Chief Justice of India, no consultation with any state government, and no parliamentary confirmation. As per Clause 4(5) of the Delimitation Bill, the states get so-called associate members, 5 MPs and 5 MLAs, who are not allowed to vote, who are not allowed to sign the Commission's decisions, not allowed to do anything except sit and watch from the wings. The Home Minister said 50% increase across the state. I want to know what happens when the Delimitation Commission does not agree to the Home Minister's suggestion. Are you going to bulldoze the Delimitation Commission also, like what you are usually used to doing? Or will the government then challenge the orders of the Delimitation Commission? Because the Clause 10(2) of the Delimitation Bill 2026 says, after the publication of the orders by the Delimitation Commission, these orders cannot be questioned in any court. Where should we go seeking for fair delimitation in such a situation? Where is our guarantee? The Constitution, in Article 368 says that amendments affecting the representation of states in Parliament must be ratified by at least half the state legislatures, not just passed by Parliament, ratified by the states. If this government is so confident that the delimitation bill is fair, why don't you place these bills before the Tamil Nadu legislature, before the Kerala legislature, before the Karnataka, or before any legislature? If the government truly believed in cooperative federalism, the slogan they have used 1,000 times on different stages, why are you running away from the state legislatures? Have you even called for a meeting? Have you even consulted with the chief ministers? Have you even spoken to the states? Have you bothered? The government passed the Women's Reservation Bill in September 2023 with great fanfare. The Prime Minister called it the civilizational commitment. But they put a condition in this very act. Women's reservation would only work after the 2021 census, which is not scheduled to happen till next year. When was the 2021 census supposed to happen? In 2021. But what happened? You said because of COVID, you had to postpone the census. Then you said operational reasons we could not hold the census. And then
by simply not talking about it, you did not hold the census. So the largest democracy in the world, the country that invented modern census, could not conduct census in this country. And now that it is politically convenient, they want to use 2011 census to redraw the map of the Indian democracy. They postponed the census and now they are rewarding themselves with the old census. Sir, I really admire. You're the only government which can turn its failure into a political advantage. Look at when this special session has been called in the midst of election of 5 states. And to speak about timing, because timing is everything in politics. And the timing of this bill are so nakedly, breathtakingly political, I'm almost impressed by the audacity of it. The entire opposition asked you to hold this session after the elections. You ignored it. And yesterday you told us that giving women their rights, bringing these bills are of utmost urgency. You cannot even wait for 2 weeks. But you came to government in 2014. The entire opposition has been requesting you to bring the women's reservation bill. All the leaders in the opposition have written to you. Our leader, our Chief Minister, M.K. Stalin, has written to the Prime Minister saying that the bill should be passed. The DMK women being brought had a rally in Delhi asking for the bill to be passed. We've raised this issue thousands of times in Parliament. And for more than a decade, you did not see or understand the urgency. But today, you can't even wait for 2 weeks. And you want to believe us that you care about women's rights. Sir, this is not constitutional reform you're talking about. This is an electoral rescue strategy in these states because you are not going to do well in most of the states. The Constitution 106th Amendment Act of 2023, the Women's Reservation Act, was welcomed by most of the opposition parties here. And the DMK welcomed it. But we said it then, and we are saying it also now. Tying women's reservation bill to delimitation is a trap. It was designed so that you could never have one without the other. So that the BJP can say, if you oppose delimitation, then you're opposing women's rights. If you oppose the destruction of Tamil Nadu's representation, you are against women. The BJP is using women of India as a human shield for its electoral ambitions. The women of Tamil Nadu, who have the highest literacy rate in India, who have the highest female workforce participation in the country, who have fought and won in panchayats, corporation councils and state assemblies, those women will not allow their cause to be hijacked. They deserve, and the women of this country deserve reservation today in the existing 543 seats without waiting for anything else. And I ask the Honorable Home Minister, why can you not simply amend Article 334A to remove the delimitation precondition? Why can you not give women 1/3 reservation in the existing constituencies through rotation starting from 2029 election without delimitation? If you really care about women's representation, the path is clear and simple. Why do you refuse to take it? Sir, the women of this country have been starved of political power for decades, for centuries. There's a loaf of bread in front of us. We are saying we are starving. Share it with us. But the government is saying, no, you cannot disturb this loaf. We cannot touch it. Wait, we will bake a huge cake. And then we'll bring it. And then give you a small portion of that. Yes. How does it make any sense? And is this your civilizational commitment? The women of this country have been working hard all their lives. They protected their families, they protected this country, they've sacrificed for the nation. And yet, all their hard work goes unrecognized and not respected because you want to tie it with delimitation. Sir,
My friends across the aisle will accuse me of creating fear. But the real dangers of this bill are that our Constitution and Article 368 requires two-thirds majority in Parliament to amend it. Two-thirds. That's not a small number. It was designed to ensure that no single region, no single language group, no single community could change the fundamental rules of India without broad consent from across this great nation. But what happens after this delimitation? Right now, in this House, we have 543 MPs. Two-thirds majority is 362. Let us say the seats are increased to a maximum of 850 MPs as per the Home Minister's assurance, 50% increase across the states. Then the total number of seats would be around 816. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand, these states together will hold somewhere between 400 to 420 seats in an expanded 816-seat Lok Sabha. Two-thirds threshold in an 816-seat House is 544 seats. Add the smaller BJP-aligned states like Gujarat, Himachal, or whatever, and the arithmetic becomes terrifyingly clear. The heartland can approach a constitutional amendment majority without a single vote from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Punjab, Andhra, Telangana, West Bengal, or the Northeast. So this is your plan. The collective bargaining power of the southern states will be effectively reduced. Their voices are not even required for fundamental changes in the Constitution. This will create an environment where the policies of the union government will be pushed down on the people who believe that this nation should remain a secular democracy. This bill looks like a prelude and a facilitator for your future agendas. And moreover, the southern states will stand to lose out on the president's election as well. Article 55 governs presidential election vote values. Changing population definition here will alter the vote value of each MLA and MP in presidential elections, giving more electoral weight to MLAs from states that gain seats through delimitation. Directly affects the federal balance in the presidential polls. This bill, sir, is ambiguous in the least, misleading, and it has no clarity or purpose. Let us see an illustration of through the Tamil Nadu share of seats in Lok Sabha. At present, we have 39 seats. As per these bills, which say 2011 census will be followed, it will become 32 seats, given there is no change to the 543 seats. If the maximum seats are increased to 850, as the Home Minister told us yesterday, Tamil Nadu will gain 48 seats. But if the seats are increased, if the maximum seats are, if the seats are increased to 50% across the states, as Home Minister says, it will get around 59 seats. Now I ask the Home Minister, which of the above scenario will happen? Whether 2011 census or it will be just increased based on 2011 census or what the Home Minister said. These are three different numbers. I would like to know, we like to have a clarity on which will happen. We want, and sir, we have seen in this House, in many debates, many promises have been made, many assurances have been given. And all that has melted into the polluted air of Delhi. Nothing has seen the light of the day. Sir, we request you to bring it into and make it a part of the bill, whatever assurance it is. And data says that this government, nearly 80 to 90% of the assurances given by this government in the floor of the House are never seen through.
Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has built a joint action committee of democratic parties and state governments to fight this delimitation. We have held all-party meetings in Chennai, we've passed resolutions, we have written to the Prime Minister, we have demanded that Parliament not rush these bills through in a special session called without adequate notice, without standing committee examination, without even the courtesy of consulting the states whose future is being decided. The Prime Minister has not met us. The government has not convened a meeting in the National Development Council. The Interstate Council, which exists exactly for this reason, has not been convened. Instead, they called a special session of Parliament and scheduled these bills for passage in a matter of few days. Sir, this is not cooperative federalism. This is just calculative politics. In S.R. Bommai and versus Union of India 1994, the Supreme Court has stated that states have an independent constitutional existence and they have as important role to play in the political, social, educational and cultural life of the people of the Union. They are neither satellites nor agents of the center. In the Rameshwar Prasad versus Union of India 2006, the Supreme Court held that the basic principles of federalism is that the legislative executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the Constitution itself. That is what the Constitution does. The states under our Constitution are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. Unfortunately, this government does not recognize the rights of the states. It simply thinks we are here to serve the masters in Delhi according to their diktat. The DMK is not here merely to oppose. We are here to govern, to protect and to propose. The Tamil Nadu and the DMK demand this government should implement the women's third reservation bill immediately in the existing 543-seat Lok Sabha through rotational reservation, delink it completely from delimitation exercise. Then we can support this bill. The women of India should not be made to wait for a delimitation exercise that serves the BJP's political interests. Withdraw these three bills immediately and refer them to a joint parliamentary committee that includes representation from all states and all parties. Do not rush a 25-year electoral map through a special session in 48 hours. Convene a constitutional conference of all state chief ministers to deliberate on the delimitation framework before any legislation is enacted. India deserves that consultation. And our chief minister, our party president, sir, yesterday has promised the people of Tamil Nadu that not one seat will be lost on his watch. And yesterday, when the DMK floor leader mentioned in Parliament that our leader, M.K. Stalin, hoisted a black flag, you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. Yes, sir, you brushed it aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. A black flag is a sign of protest. Yes. A sign. Yes. A sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. Yes. And I like to remind you that a blue flag, sir, is the color Dr. Baba Sahib Ambedkar chose for his party flag. It is the same blue color which you dismiss that the man who taught us that we should educate, agitate and organize. The man who wrote the Constitution chose for his flag this very Constitution you are trying to dilute and we here are trying to protect. And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tiki or
Tika. What? Tika. Yeah. And it is there to drive away evil forces. Evil eye or evil forces or whatever. Yeah. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance, and ignorance. And the same black color we have chosen to protest is the color of Periyar, our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end. And we will fight till the end. Sir, we oppose these bills in the name of our leaders, Aringer Anna, Kalangar Karunanidhi, who said, states are not a unit of the unitary state, but equal partners of a federation. In the name of our Chief Minister, M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, who even in an article today has said that this bill should be withdrawn. A fresh bill should be introduced and placed in public domain at least for 3 months for wider consultation. He says, the moment calls for reflection, not expediency, deliberation, not haste. If the Constitution is to endure as a charter of trust, its amendment must be guided by principle, anchored by fairness, restraint, and fidelity to the Republic's enduring integrity. Tamil Nadu போராடும், Tamil Nadu வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். Dr. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Speaker. I must say that we all strongly endorse the very impressive presentation by the Speaker before me, sir, because this is a matter that touches the very soul of our democracy, the representation of half of our population in the hallowed halls of our parliament. And for decades, the Women's Reservation Bill has been long promised, frequently discussed, perpetually delayed, like waiting for Godot of our political system. Today, we stand at a threshold where there is remarkably a near unanimous political consensus in favor of women's reservation. Every major party in this House recognizes that the time for tokenism is over and the era of equal partnership must begin. And yet I'm finding myself deeply perturbed by the legislative exercise before us. The Prime Minister says the government has brought Nari Shakti, a gift of justice, but he has wrapped it in barbed wire, tethering the implementation of women's reservation to the expansion of Parliament, to numbers from the 2011 census, and an exercise of delimitation. Why, Mr. Speaker, why must we entangle a moral imperative with a demographic minefield? Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों. It can and should be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history. Sir, delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps. It is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise, sir, carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least 3 major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development,
and those states, mainly in the north, who have not. Yet in future delimitations, states that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight, and we must ask if this is the message we wish to send, that governance excellence leads to political irrelevance. Third factor, sir, the balance between the states that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of central funds. A delimitation based purely on population would further marginalize the voices of those states that provide the lion's share of resources that keeps our union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor states could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller states and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country. Conversely, states with high population growth but lower economic productivity could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens, sir, to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonetization. And unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation, sir, will turn out to be political demonetization. Don't do it, sir. Now, I want to say the 50% formula that suddenly the Home Minister came and presented to us yesterday regarding the delimitation exercise, promising that no state will lose its current number of seats, total House strength will increase by 50%. This remains a precarious political assurance and not a legislative certainty, because the pledge is fundamentally contradicted by the existing text of the legislation itself, which gives total freedom to the Delimitation Commission appointed by the government, whose decisions cannot be challenged in a court of law. Since this formula, what Shri Amit Shah said, is not codified as an immutable constitutional or legislative safeguard, it could be easily discarded or altered by a simple parliamentary majority, offering no guarantee that it will survive beyond the very short term. Furthermore, expanding the Lok Sabha to an 850-member House would create the legislature that is by far the largest in any democracy in the world, resulting in a body that will be unwieldy and unworkable. This is especially true, sir, in an era where the government has been systematically reducing the duration of parliament sittings. Whereas the first and second Lok Sabhas met for an average of 125 days a year, the 16th and 17th Lok Sabhas saw that figure plummet to just below 60 days, sir. In such a constrained schedule, what will your job be, sir? An 850-member chamber would require at least a doubling of the time currently allotted to question hour, 0 hour, for a majority of MPs. मेरे कार्यकाल में होगा तो सबको मौका दे दूंगा. Sir, for a majority. देर रात कल भी इसी महिला संशोधन बिल पर रात को 1:25 तक सभी महिला सदस्यों को मौका दिया, सबको. देखिए, लेकिन ये भी आपके बारे में भी चिंता है, सर. और for a majority of MPs to have any chance of meaningful participation, you'll have to double the time allotted to question hour and 0 hour, failing which a majority of representatives would be effectively silenced, sir. How will you manage to give 850 MPs a chance to speak? As it is with 543, many of us don't get questions. Sir. You are saying no whenever we ask for the floor. शशि थरूर जी, मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन इस सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता कि मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता, चाहे शून्यकाल हो चाहे विधेयक हो. जितनी देर बोलने देना चाहता सबको बोलने देता. और अंतिम रात को अंतिम रूप से मैं लास्ट में रहता हूँ कि कोई बाकी रह गया हो तो भी और बुला देता हूँ. 850 होते हैं, 850 होते हैं. आपका हाल क्या होगा मुझे पता नहीं. Anyway, another concern, sir. नहीं, राजा जी फर्स्ट टाइमर को विशेष रूप से बोलने का मौका देता हूं. कोई फर्स्ट टाइमर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे बोलने का मौका नहीं. Sir, let me continue, sir.
Another concern is while the size of the Lok Sabha is being expanded in the government's proposal, there is no corresponding proposal to increase the strength of the Rajya Sabha. Raises a serious structural concern, sir. This alters the relative balance between the two houses. In the event of a joint sitting, the significantly larger Lok Sabha would dominate the voting process, and the imbalance would also extend to the elections of President and Vice President, where each MP casts an equal vote. So we are amplifying our own House and our own weight without, unfortunately, giving any heed to our colleagues in the upper house. And you can imagine, if the upper house is the chamber of states, then you can understand the concern of states that their weightage is not being respected, sir. Now, these are all problems, Mr. Speaker, that cannot be solved by a simple calculator. They require a great compromise. A historic settlement is needed in our country that ensures that no region feels diminished. And, sir, even though one of the BJP speakers had criticized me for making some suggestions from international examples, let me say there is no harm in looking to international examples where diverse unions have grappled with this exact tension. In 1787, the American framers, for example, faced a deadlock between large and small states. And so they led to what was called the Connecticut Compromise, where their solution was a bicameral legislature, a House of Representatives based on population, and a Senate where every state, regardless of size, has exactly 2 seats. So you may be a tiny state like Goa or Sikkim, and you might be a gigantic state like UP, you'd have the same number of seats in the upper house. That's one idea. I'm not saying we should adopt it, but we should discuss it. Another idea, say the European Parliament. They use a system of principle of digressive proportionality, where larger seats do have more seats than smaller ones. So larger states will have more MPs, but smaller states are given more seats than a strict population ratio would justify. So it is true that in Europe, in the European Parliament, a Maltese MP will represent only 80,000 people. A German MP will represent 8 lakh people. But it doesn't matter, they stay united. So we need to consider these options. We are a union of states, sir. And the whole idea is we want to create a formula in a serious delimitation discussion where the smallest members of our country and our polity still have a voice loud enough to be heard. These models teach us that in a complex union, the principle of one person, one vote, one value, which has been cited by the ruling party, must be balanced with the principle of one state, one equal partner, one value in a country like ours. As India approaches a new delimitation exercise, sir, the constitutional question is whether the spirit of cooperative federalism can be preserved through a model that respects demographic reality while preventing structural domination by a few large Hindi-speaking states. Digressive proportionality would not violate constitutional democracy. It would operationalize the Constitution's deeper commitment to the Indian principle of balancing unity with diversity. Sir, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है, सर। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुनर्निर्धारित करना चाहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। I urge the government, therefore, to decouple these issues. Pass the Women's Reservation Bill today, we will support it. The Prime Minister spoke with passion about Nari Shakti. Let it take effect already in the next general election, using our current seat count. Show the women of India that your commitment is not a mere rhetorical flourish. As for delimitation, sir, let us defer it. Let us constitute a formal mechanism, perhaps a JPC, sir, to debate a new federal settlement that protects the interests of all states. Let us ensure that a march towards a new India does not give us a disunited India. Let us not leave our most successful states behind. Bharatiya ekta ke liye hame kaam karna chahiye, sir.
Let us give women their due now. Mahilaon ko nari shakti hi de de, or give our nation, our union of states, the time it needs to solve its demographic challenges with wisdom and not just arithmetic. बस मैं यही कहना चाहता था संक्षिप्त में सर. Thank you very much for listening to me. It's a plea to the government. Please be sensible about the larger interests of the country and not the short-term interests of the ruling party. Jai Hind, sir. Shri P.V. Mithun Reddy. Thank you, ma'am. Yesterday we heard the Home Minister speak in the evening. He was saying about, he spoke about a proportionate increase of seats for, based on the existing number of seats what every state has. So we welcome this, but we have concerns. Madam, we have concerns because a mere oral commitment is not enough. I will tell you an example also. On this very floor of the House during the partition of the state, both the Congress and BJP promised us, the then Prime Minister himself promised us special category status for the state. It was an oral promise and it was not kept up. So we demand that it be, whatever commitment was given yesterday evening be incorporated in the bill. Yes. I will tell you a reason also. One of the amendment passed by Sri OICG carries the same content. If that amendment is accepted, the same thing whatever the Honorable Home Minister has promised in the floor of the House will be incorporated into the bill. So we demand that it be put, whatever promise was given may be part of the bill. And a lot of members spoke about regional imbalances. So in a way we are addressing the regional imbalances of the country, but the regional imbalances of the states also should be taken into consideration. Each state has various regions, and after the delimitation process, regional imbalances should not arise in every state. This is a very important aspect. Whatever yardstick you have taken for considering increase of seats in the country should be also applied for the state also. No regional imbalance should should occur in the states also. And there is one more condition in the delimitation committee which says that 5 members, associate members will be picked up from the parliament and 5 from the state. Madam, we have a doubt. What if the state speaker does not give the opposition parties even 1 member? So fair representation should be there for all the parties, be it the ruling or the opposition. So we demand that this also be incorporated in the bill. So some comfort should be given regarding this. And overall, this delimitation process should be a national building process. It should not be such that it should not be a tool to crush the opposition. And regarding women reservation, our party and our leader has always advocated empowering of women. So we welcome the women reservation bill in any form, any time. Madam, I would like to recall as a Chief Minister what Mr. Y.S. Jagannath Reddy did in our state. He gave 50% reservation for women in all the local bodies. He gave 50% reservation for women in all the nominated works. He also gave maximum importance for women in all the social welfare schemes. He proposed, all the 32 lakh outside patas what we have given in the state were registered in the name of women, and all the social welfare schemes were given through the women. Madam, we demand strict and stringent laws for safeguarding the protection, safeguarding the women's security also. Madam, one of the Telugudesam MP spoke yesterday regarding protection for women in the state. So I will also add upon this. Recently, Madam, 4 MLAs were caught videotaped, audio taped in Andhra Pradesh harassing women on the, they made video calls and harassed women. 4 MLAs were caught. This is not just one vague allegation. If you just type harassment by Andhra Pradesh ruling MLAs on women, you will get all the videos, but I have to pass a advisory also. Open it at your own risk. These are filthy and real horrible. But what happened is that the women who complained, who gathered the courage to complain, were harassed and targeted, madam. None of the MLAs, no action was taken. So we demand stringent laws. We demand that, be it anybody, we demand all the MLAs be taken to task. So apart from empowering women, we demand that strict laws be there to protect women also.
In principle, we support this bill and we demand the government to consider all our concerns. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। महोदया, आज सदन के सामने एक संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक विचार के लिए रखे हुए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं इस प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक ला के उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। महोदया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से, प्रारंभ से, माननीय सदस्य सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य इस तरफ भी प्लीज। माननीय महोदया, कंटिन्यू। महोदया, प्रधानमंत्री जी का शुरू से, प्रारंभ से एक विजन रहा है और वो विजन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज जो ये 3 विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक जो सदन में लाए गए हैं, वो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लाया गया है। महोदया, 50% महिलाओं की आबादी है और अगर 50% आबादी के प्रति न्याय नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनका ये विजन पूर्ण नहीं होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह लाया है। आज इसलिए लाया है उन्होंने कि जो कानून बनाने में आज पंचायतों में है, पंचायतों में 33% आरक्षण था, कई राज्यों ने 50% आरक्षण किया, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा और सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रही हूं। इस देश का कानून बनाने में, राज्य के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50% महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको कानून बनाने में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है, यह उनकी सोच है यह कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें 33% महिलाएं इस सदन की सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में
33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं, सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया और इसलिए और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए। 50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं, महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी है ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है, अब विधानसभाओं में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है, 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है, ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं। वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं।
आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है। तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है। इस गलतफहमी में नहीं दीजिए। तो सभी उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण, थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं। अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समाप्त बचा हुआ है बहुत कुछ। तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो बरसों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं। हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है। हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे, एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए, मैंने देखा है बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए। 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। ऐसा क्यों अन्याय कर रही हैं आप मैडम? अन्याय मत करिए, आप ऐसा अन्याय मत करिए। मेघवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उनकी पार्टी का टाइम दे दीजिए इधर। बोलिए मेघवाल जी। अब 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि मुझको कब मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने आज उनको मौका दिया तो आप विरोध में खड़े हो गए। अरे ऐसा क्या है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए
हम विपक्ष से अपील करेंगे, हट धर्मिता छोड़ दीजिए, हट धर्मी मत बनिए, रास्ता मत खोजिए, इधर उधर बाएं दाएं जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच कहा है। अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप क्या बात करिए, कल प्रियंका जी बोल रही थी, आपने क्यों नहीं पास कराया? अरे प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में 4 बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए, उनसे झटका मारिए। और अगर उनके साथ सटे रहिएगा तो बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19 से 6 और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं। तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50% की आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। इनको अगर भगवान सुबुद्धि दे, इस वर्ष से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सुबुद्धि दीजिए ताकि जो आने वाले दंश हैं वर्षों तक उससे ये बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, the Honorable Chairperson. We are opposing the entire 3 bills, and the reasons which I will speak later on. Madam, our Prime Minister has having a great quality. The quality is the moment he understands that next election he is going to lose the election, he changed the रूल्स ऑफ गेम। इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए रूल गेम को यही ले आए। इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग मोर देन दैट। द प्रेजेंट बिल्स आर अंडर डिस्कशन आर प्रोडक्ट ऑफ सच थॉट्स। मैडम, द प्लॉय ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, व्हाट दे आर सेइंग, वुमेन, दिस इज अ प्लॉय। ओरिजिनल प्लान इज समथिंग डिफरेंट। That is delimitation, that is seat adjustment, that is the original plan. थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट वोमेन का लगा दो। इस वोमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग चढ़ना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है, आप लोग क्या करेंगे? अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240,
फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वोमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर, हाँ। और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए एआईटीसी। लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, percentage is 39.28%. Not a single party in India has given it. राज्यसभा में 39 member, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। So, madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. Is it our country? Never you did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know how many women voting percentage in the country? Women voting percentage in this country is 65.78%. ये सरकार सब चल रहा है ना, जिधर ही जो सरकार है वो वोमेन वोट से चल रहा है, और वोमेन को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया। मैडम, आई क्या गलत है? क्या बैठे 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 बैठे। Now if we read the constitution, this is 131 amendment bill. 131 amendment bill. मोदी जी का मान की टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का मान की टीम है ना, श्री राम का तो हनुमान जी था, और मोदी जी का कपाल में भाग्य में बंदर मिल गया, क्या करेगा? सर, मैडम, see we have protested on that day in 2023. Why? Objection, ma'am. Why? Whom are you calling monkey, please? No, that is you analyze. You analyze. No, kindly see, madam, when this 334A was brought, when 334A was brought, then kindly see, this has been made reservation of seats for women. Reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly, etc. That shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose after the relevant figures. Why you have done it that time? Why you have said after the delimitation will come? Why do you didn't make this reservation policy will be implemented immediately? We have said so. You have not done it. You have made the point after the delimitation. Unfortunate parties, 334A, this amendment was brought in 2023 and it has been implemented yesterday in the midnight. And this whole system, I don't know, Parliament Minister, you have tried to this. You are making the entire system of the parliament into a mockery. The act which has not been given effect to, how there can be an amendment? I don't understand this point. Amendment कब होता है? जिसको लाइफ आता है उसका बाद तो amendment होता है। अब लाइफ ही नहीं दिया, amendment लेके चला आया। Somebody has advised Mr. Law Minister must be yesterday
Then what are you doing? You have not given effect to. तब रात में नोटिफिकेशन निकल गया. जो रात में नोटिफिकेशन निकल गया, इफेक्ट दे दो भाई. नहीं तो totally faulty procedure you are taking. Now 334, this is the, you could have done it. This is not done. Now next point is, the evil intentions of the present bills have been brought in the House by calling today's House to start the delimitation in a hottest manner. What is the problem? हमारा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग को छोड़ के उधर छोड़ के आना पड़ता है. जब गुजरात में इलेक्शन होगा तब तो एक महीना कोई हाउस ही नहीं बैठेगा. जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तब एक महीना तो हाउस ही नहीं बैठेगा. हाँ, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तो हाउस में नहीं बैठेगा. बंगाल में है, कर दो भाई, सबको ले आओ. तमिलनाडु को ले आओ, वो तो अपोजिशन में है, उनको लोग को ले आओ. This is the hottest manner, and this is totally unfair. This is an attack on the democracy. This is not a level playing field. Unfortunate. Now, madam, I have seen a picture. Picture was widely circulated. Must be everyone has seen it. The Honorable Chief Justice of India, along with his wife, pushing into a button in a app for registration of their names in the census. Census process has then begun. When census process has been begun, until the census process is not finished, how there can be a delimitation? Is it not totally inconsistent? You have introduced it. Unconstitutional. I am coming. This is you have begun. You have begun it. Now in the midst of it, you are saying no. We'll go by the 2011 census. Just I give you some data, madam. You see, first delimitation had taken place in 1953. Census was 1951. Second delimitation had taken place in 1963. Census was 1961. Third delimitation taken place in 1973. Census was 1971. Fourth delimitation, that is in 2002. Census was 2001. Now you are relying upon a census of 2011. You are talking about this. 2011 to 2026, 15 years have gone. You are making a law into a mockery. What right you will give to the peoples of this country? What right you will give? Madam, I don't have any objection, kindly. I don't have any objection. I am giving a suggestion. Accept it. I have 50% reservation on the basis of this. Let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the Prime Minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है? दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है. लेकिन unfortunately बीजेपी will not come back in power in 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वोमेन के लिए, कर दीजिए. हम लोग राजी है. अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है. क्या हम लोग राजी ना? 50% seat should be reserved. 50% minister should be reserved. Why only Nirmala Sitharaman? Make more cabinet minister for the women. Let us hear, let us see. Madam, see, just give me, madam.
representation should be constitutional, not convenient. It should be constitutional, it should be done. We oppose the linking it with the delimitation. Women's reservation is not bargaining. Today you have brought it for the bargaining purpose, to pass the delimitation. You are making this woman representative woman bill for the bargaining purpose. Why should you accept it? We respect the woman. हम लोग नारी शक्ति के भरोसा करते हैं। मंत्री जी थोड़ा मेरा पास आए जाएंगे। काली जी और दुर्गा जी के लेके रहते हैं, आप तो सिर्फ जय श्री राम लेके रहता है। हम काली जी दुर्गा जी का भक्त है, समझा? हम लोग हैं सब। और श्री राम जी भी किसका पूजा किया? दुर्गा जी का पूजा किया था। ये पैरिटी, हाँ आप लोग सीता की भी नाम लेते नहीं लेते हैं। अरे राम जी, सीता छोड़ के राम जी कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, आप लोग बोलते हैं श्री राम। यही तो डिस्टिंक्शन है। हम सीता जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप तो उसको भूल ही गए। The parity is stated. Madam, give me some time. TMC has already, Madam, we have 2011 we have come into the power in the state of West Bengal. And Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister's Mamata Banerjee's first step was 50% reservation in the local bodies. देख लीजिए उधर कितना प्रधान है। We have done it. 50%। अरे बैठे सीपीएम का सर लड़ने का हिम्मत नहीं था, बैठे। डेमोक्रेसी लिया है इसलिए बात करता है वेस्ट बंगाल, बैठे। माननीय सदस्य सर, मैडम, there is no constitutional necessity to increase seats or undertake delimitation to implement women reservation. जरूरत नहीं है। The bill empowers women in text but empowers the executive in structure. Madam, what we say, we support the bill we will support the bill of the women reservation, but not with the delimitation. Reject the attempt to bundle delimitation with representation reforms. Madam, another important question, constitutional question. Question is, you have punched up, including Article 51 of amendment. You have punched up everything. What are the punched up? Madam, just important constitutional question. Minister, I will want to point it out to the ministers. You have punched up, you are amending Article 51 along with this bill. For passing the bills, you need 2/3. You don't have. And for Article 51, you have to go to the hub of the states. How can you do it? This is a political gimmick, nothing more than. You don't have any intention to make reservation for the woman. माननीय सदस्य श्री लाभू नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी। माननीय सदस्य श्री पूरा लाभू ड्रामा चल रहा है। Thank you, madam. Thank you, ma'am, for allowing me to speak on this important amendments. Ma'am, I represent Telugu Desam Party. On behalf of Telugu Desam Party, I'm standing here. A party which is a regional party from Andhra Pradesh, which has substantial amount of members in this house as well as in Rajya Sabha. On behalf of Telugu Desam Party, I stand here in support of both women reservation. On behalf of Telugu Desam Party, I stand in support of delimitation also. And as just Mahuaji has posed, a lot of people are posing a lot of questions to us. Of course, this is democracy. A lot of people will pose and we have to answer. As a regional party, that too coming from South India, the first question is, as you're coming from South India, are you going to support this? Second question is, will TDP support delimitation as well as women's reservation if the seats are 543 or 815? Whether TDP had considered
about losing its representation with increase in seats? These are the questions. And fourth question was, why TDP is not asking for 2011 census or latest census? And fifth question is, does delimitation be fair? Wouldn't it be gerrymandering? These are the questions that people are posing it. Members inside the House and media outside are posing this to the తెలుగుదేశం party, and it's our duty to answer these questions. And it is our duty to put it on record also in this House. Ma'am, తెలుగుదేశం party is in support of Women's Reservation Bill because we believe in what Ambedkar said. What Ambedkar said was, a constitution is a vehicle of life guided by the spirit of the age. Ma'am, from yesterday onwards, we could see a lot of women coming and sitting in the gallery in the anticipation. Thank you, Dada. Thank you, Dada. So they came in anticipation, inside the House and outside the House, the women sitting with anticipation that their representation will increase in the Parliament, in the Assembly also. Because until now, the policies are made for them also, even for women, are made mainly by men. And the time has come for women to actually raise their voice, to actually make the policies for themselves. And this is the spirit with which we are supporting this women's reservation, ma'am. And I said, this is the spirit of the age that people are asking for this, that women folk, which has 50% population in this country, is asking for this. So we need to understand why they are mooting for this, and they're fighting for this for so many years. And time has come, under the leadership of Narendra Modi ji, that this important amendments has been brought forward, and we need to support this, ma'am. Ma'am, the other thing we should also accept is the change is constant. It is never, it is never going to be same all throughout. With the times, there will be changes that will happen. Even with our constitution also, there are multiple amendments that are brought in. After almost 77 years, we are discussing about the 131st amendment. Because we believe that Indian democracy is vibrant. Our constitution is a living thing. And Ambedkar also mentioned that. So there are a lot of amendments that are brought in. That is the reason why Indian democracy is thriving. When you compare countries around us, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, ma'am, if you see all of them, how many coups have happened in that countries? How many armed revolutions have happened? How many times the constitution itself has collapsed? Why it didn't happen in India except for those 3-4 years during the emergency? Why democracy has thrived in India was because we believed change is constant. We believed what Ambedkar ji has mentioned. So this is a time we should respect that, and this is what women folk of India are asking for. This is the change they are looking for. So we need to support this. I'm requesting the opposition parties also, please see through it and support this. And the second question that everyone is asking is, would you support it even if it is 543 seats, or will you support it only if it is 815 seats? Ma'am, let me remind this House, when we talk about women on behalf of Telugudesam party, we don't talk about women as a voting issue, but we actually look at it much more deeply. We look at it in a way that we need to empower them socially. We look at it in a way we have to empower them economically. We need to empower them politically also. That is the ethos that our founder, N.T. Ramarao Garu, has believed in. Ma'am, he was a man of different ideas. At that time, all the political leaders expected people to come to them. But he was the leader who could go to the people. He traversed thousands of kilometers in Andhra Pradesh during his first election campaign. He could see what troubles women are going through at the rural areas. So when he came to power, when he became the chief minister in 1983, he came up with very revolutionary ideas. Until then, the property that is belonging to
member in the father is always going to the male in the family. But he has brought in the reform in the Hindu Succession Act in 1986. He made sure 50% of the property belongs to the girl child also. And he also brought in women reservation to 30% in government jobs. On top of that, he has seen what will happen when the government schemes are actually delivered to the women. So what he has done was, when he has to give housing to the poor, he made sure that site is actually registered on the name of the woman in the family rather than male in the family. So he fought for their economic stability, fought for their social mobility, ma'am. So this is what we believed in. This is the ethos that our founder, N.T. Ramarao Garu, believed in, ma'am. Not only that, he saw there's only 25% of the literacy with the women at that time. So he came up with various initiatives, started a lot of schools mainly for the girl children. He also started a women's university in Sri Padmavati University in Tirupati, specifically targeting women so that they can get educated, their literacy can go up, ma'am. This is what N.T. Ramarao has done. And after that, Chandrababu Naidu Garu has followed the suit and he has taken it to the next level. He has launched Dwakra program, what the SHE program that we talk about, Lakpati Didis that we talk about now. He has launched it in 1999. He has made sure that women are not just depending on the male in the family, but actually economically they can also have ideas, they can also come up with the business ideas, and they can also support the family. That is the idea with which he has launched the Dwakra program. And also he has given 33% reservation for women in local body elections. Ma'am, I have almost 14-15 minutes, ma'am. So, and on top of that, the Deepam LPG cylinder scheme was launched in 1999, mainly for the women folks, so that they can have that economic stability for them, ma'am. Ma'am, this is being continuous. Even now, the main programs that are schemes that have been given to any family in the Andhra Pradesh are targeting the women in Andhra Pradesh, ma'am, with Sri Shakti, Talliku Vandanam, and Deepam 2.0. Ma'am, because we believed in the empowerment of women, this is what from the founder of the party to now the chief minister, this is what they believed in. So if it is 543 seats or 815 seats, Telugu Desam party is in support of women's reservation in the women's reservation bill. And the third question that everyone is asking is, wouldn't you lose out on representation with increase in the seats? This is the question that everyone is asking, and media people are also playing it in a very different role. Ma'am, yesterday, Home Minister has clarified in the House itself that with 50% increase for every state, Andhra Pradesh right now has 4.6% representation in the parliament. With that increase, the actual representation in the parliament for Andhra Pradesh with regards to the MPs will go by 4.66%. So we won't be losing on that. But I want to remind this House, a lot of opposition parties are asking for 1971 census to be used as a mother data. Ma'am, right now when you're increasing the seats by 50%, on what basis that is happening? The freeze happened in 1971. On that freeze, the 50% of seats are being increased right now. So whatever opposition is asking for is actually happening, but they're not able to see through. They just want to be, they just want to oppose it, politically oppose it anyhow, but they're not seeing the logic through it. Ma'am, in the DMK has called for they called for the meeting, and I think various other parties also has attended that, ma'am. On March 25th, 2025, DMK passed a seven-point resolution demanding a 25-year extension of 1971 freeze, effectively asking to keep India's representation tied to that number, ma'am. In this JAC, CPM participated, BRS participated, AAP participated, Congress participated, and TMC participated. They asked for the freeze. Right now, on that freeze only, that 50% is being increased. So I don't know why opposition is not able to accept that. There's nothing new that is being happening on the 1970 population freeze, where 543 seats have been allocated. On top of that, 50% has been increasing, and yesterday Home Minister has clearly clarified. And even then, if you can't accept
the truth of what is happening. Even then, if you want to give out the fake narrative, false narrative, saying South India's number will go down, South India's representation will go down, I hope and I request the opposition to actually come to census and actually accept what the delimitation means and support the delimitation process in toto. Ma'am, the fourth question that everyone is asking at, why not 2011 census or the latest census? I'll give you the example of Andhra Pradesh, ma'am. Ma'am, in Andhra Pradesh is a very special example because no one has gone through that. When the last delimitation happened in Andhra Pradesh, what happened was we were Andhra and Telangana were together. But when the delimitation happened, there were 3 parliament segments that have come up in Telangana and 3 we lost in Andhra Pradesh. But in total, we lost 1 parliament segment to Telangana. Even there were 7 MLA seats that were increased in Telangana region, and Andhra Pradesh was lost 7 assembly seats. Reason being, there's no politics here, but the reason being that population migration happened to Telangana at that time, ma'am. So if you go by that logic of using the latest census of 2026, ma'am, if you've seen the data, Andhra Pradesh fertility rate has been going down for almost one and a half decade. Our migration has been increasing for the last 2 decades. So if you go by the latest census or by the 2011 census also, we'll be losing out. The best deal for us is what Home Minister has proposed yesterday, wherein we are not losing it. Actually, we are increasing by 0.6%. So that is the reason why TDP is supporting this, ma'am. And the last question that everyone is asking is, does delimitation be fair? Wouldn't be gerrymandering. Example, yesterday, even K.C. Venugopalji has spoken about it. Ma'am, I'll give you the example of what happened in Andhra Pradesh when 2009 delimitations happened. Kuppam constituency, which is in Chittoor, our CM's constituency. It is in Chittoor parliamentary constituency. So at that time, Congress, which was in power, did the gerrymandering to make sure that the CM constituency is a target in such a way that no leader can come out of that. But and they reserved the seat to the SC candidate at that time. That is what they have done in 2009. That is the actual gerrymandering. But what happened, ma'am? People saw through it. If you are smart, people are even smarter. From 2009 onwards, in 2009, after doing all this gerrymandering also, TDP has won. In 2014, same seat, even TDP has won. In 2024, again TDP has won that seat, ma'am. In 4 elections, after doing all this exercise, all this gerrymandering, even then 3 times the TDP has won. Even in my district, ma'am. Even in my district. Making sure that, as a senior member was asking, making sure that a term from Illinois. Gerrymandering was Illinois wherein senator. you bring in all the voters in such a way that you will get advantage for the party in the ruling rather than party in the opposition. That is what the gerrymandering actually is. Even in my district in Guntur, ma'am, they did the same exercise. Tadikonda constituency, where they thought one a cadre or one community was supporting in support of Telugu Desam party, we should corner them, so they made it a reserved seat. Even Pratipadu constituency, they did it, but people saw through it, ma'am. People want to vote. People are smarter. They can't be fooled like how opposition is expecting. When the Congress was in power, they tried to fool the people. Yes, they did. They tried to fool the people by doing this. Because right now they're raising this issue of delimitation because they know what thievery they have done in 2009 delimitation. That's why they think that can happen. Yesterday I've heard what Home Minister has mentioned. Based on that, yesterday Home Minister has mentioned, yesterday Prime Minister has mentioned, promised us, they gave a guarantee in the House. Based on that, we are supporting this bill. We are supporting women's reservation. We are supporting delimitation. Telugu Desam Party is supporting women's reservation and delimitation, ma'am. Thank you very much. माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूँगी, जो सत्ता पक्ष है
वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और ये सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल गोगो हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहाँ पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े? आज हमारी यह मांग है कि आप OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो OBC महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं।
आप कहते हैं आप महिलाओं की हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप सब वाकई में चाहते हैं अगर महिलाएं सशक्त बने तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए सेगर जी का जो पूरा कांड हुआ, और लगातार जो उत्तराखंड में कांड हुआ, जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी तब तो विपक्ष दल की सब सांसदें खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी, भरपूर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद खड़ी नहीं हुए। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। मैं जो ये मोह में है, सत्ता के जो मोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं और जिस तरह से डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, जिस तरह से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक, सम्मान, अधिकार नहीं दे, तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर जी ने जिक्र किया था कि जब 2023 में ये बिल आया था सबने साथ दिया था और तब साथ देने पे भी उनकी सरकार आई, लेकिन वो ये ना भूलें कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, 2024 में इनकी सरकार आई थी, तो पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अभी कौन सी सरकार है? अभी सहयोगियों के साथ इनकी सरकार बनी हुई है और अब दोबारा ये बिल लेके आ रहे हैं एक भ्रम फैलाने के लिए, एक इस तरह की भूमिका बनाने के लिए। लेकिन अब जब 2029 में जब चुनाव दोबारा आएंगे तो मेरा पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी, ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप वन पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ लेकिन आप शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब क्या बात करते हैं? तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सब ने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की, सब बच्चों ने सुनी है, हम आज भी अपने उसको जहन में रखते हैं कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के
रात हो जाती है और जब लड़की पहुंचती है तो हम सभी जानते हैं कि दादी माँ तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सरकार है, ये डिलिमिटेशन का जो मुखौटा, जो ये आरक्षण का, महिला आरक्षण का जो मुखौटा पहने हुए है कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करें, लेकिन वाकई में ये डिलिमिटेशन के प्रयोग से अपने आप को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। शुक्रिया मैडम। मैडम, 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लेके आएंगे, लेकिन 9.5 साल बाद सितंबर 2023 में फाइनली स्पेशल सेशन ही बुला के ये बिल वो लेके आए। और वो बिल भी जब लेके आए, उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनैनिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके, अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू करते, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन, क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन बिल जिस तरीके में भी आए हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि कल गृह मंत्री जी ने जो सारे पार्टियों में था कि प्रपोर्शन वही रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रपोर्शन वही रहेगा। लेकिन वर्बल एश्योरेंस का क्या फायदा है, क्योंकि अदालत में नो वर्बल एश्योरेंस टैक्स, ओनली रिटन एश्योरेंस। Nowhere in any of the bills does it say that the proportion will remain the same. ये 50% जो इन्होंने इंक्रीज किया है, ये कहाँ से फिगर आया, किससे सलाह मशवरा किया, किससे कंसल्टेशन हुई, और 50% क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस नारी शक्ति और मातृ शक्ति की आप बात करते हैं उसको आप इतना तवज्जो नहीं दे सकते कि यहाँ पे पहले 50% इंक्रीज करें ताकि कोई आदमी की सीट ना हिल जाए और इंक्रीज सीटों से महिला को दे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि 180 देनी है 545 में से, तो हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो हैं, 100 आदमियों की बात है, अब जैसे है वैसे करिए। 100 आदमी, हम 80 साल रुक सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, या क्या चंद साल सेंसस के लिए और डिलिमिटेशन के लिए बंदे नहीं रुक सकते? सो मैं यही आपसे आग्रह करूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो हम पंजाबियों को मिला था 86 में कि चंडीगढ़ मिल जाएगा। आश्वासन हमें ये मिला था नोटिफिकेशन कि हमारे बंदी से क्रिया किए जाएंगे। आश्वासन हमें यह भी मिला था कि डीएम रंधावा का जो कत्ल किया है आम आदमी के मंत्री ने, वो सीबीआई को दिया जाएगा। सो वर्बल एश्योरेंस का तो कोई फायदा नहीं, उसको आपने जो लिखा है उसको आप कानूनी बिल में डालिए, क्योंकि बिल ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जब सेंसस होएगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन होएगा। आप ये लेके आना चाहते हैं कि ना तो सेंसस हम बताएंगे कौन सा हो रहा है और डिलिमिटेशन किस हिसाब से होगा ना वो हम बताएंगे। तो आपका निशाना ये है कि सेंसस आप जो मर्जी कराइए, डिलिमिटेशन आप जब मर्जी कराइए,
आप अपने नंबरों के बलबूते पे, जैसे आप पिछले समय पे करते रहे, यू बीन बुलडोजिंग ईच एंड एवरी बिल, ईच एंड एवरी लॉ, दैट इज व्हाट यू प्लान टू डू। और हम इस विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन का आप काम कर रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसका साथ हम नहीं देते। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसको आप बिल में डालिए। कौन सा सेंसस युद्ध होएगा? हाँ, हम मानते हैं कि proportion of parliament should increase, but it should be in a transparent manner, not in a manner that divides the nation, not in a manner that disadvantages some nation, because federal democracy means equal representation to all। और ये आपकी नीयत क्या है, ये देश की जनता देख रही है। मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि हर बारी जब भी इलेक्शन आती है तभी औरतों की याद आती है। ये 24 में इलेक्शन थी तो 23 में आ गई। कभी बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं। कभी हमारे राज्य में कहा जाता है 1,000 मिलेगा हर महिला को, तो 4 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। 6 महीने रिएक्शन में जाते हैं तो एक बार फिर वो बात होती है। कभी कांग्रेस कह देती है घर घर नौकरी मिलेगी। तो ये कब तक ये औरतों को ये कैरेट दिखा के, उनको सपना दिखा के, उनकी वोटों लेके और सारे राज्य में देश में ढिंढोरा पिटा के नारी शक्ति, नारी शक्ति। और नारी को आज 75 साल मिला क्या है? 75 साल के बाद क्या शक्ति मिली है? जैसे ये पार्लियामेंट है वो सबको दिख ही रहा है। और अगली पार्लियामेंट कैसी होगी, ये बिल आपका पास होता नहीं होता, किसके साथ क्या समझौता किया है, वो तो चंद घंटों में सबके सामने आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि हम 33% रिजर्वेशन औरतों का हमने सपोर्ट किया, हम फुली सपोर्ट करते हैं। गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। पहले आप वो कानून लेके आए थे, अब उस कानून में बदली आप चाह रहे हैं। आप ही ये 33% रिजर्वेशन लागू नहीं होने दे रहे हैं। और डिलिमिटेशन रिजर्वेशन के आड़ में जो लेके आ रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ट्रांसपेरेंट कानून बनाइए और औरतों का उनका बनता हुआ हक देइए, तभी ये नारी शक्ति, मातृशक्ति की बात हो सकती है। नहीं तो ये जुमले, ये हवा में सपने, ये तो कई सदियों से औरतें देख रही हैं। और ऐसे ही कभी वो दिखा दे, कभी आप दिखा दे। औरतें तो जहां थे वहां ही खड़ी हैं। आदमियों के खिलाफ लड़के हम यहाँ पहुंच रहे हैं। हमें शक्ति की जरूरत नहीं थी, रिजर्वेशन के बिना हम लोग यहाँ पहुंच गए। और जो हमें मौका दें तो आगे भी पहुंच जाएंगे। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप 545 में ही हमको 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। हम आपको यहाँ पे 33% हम आके आपको दिखाएंगे कि आप हमको सीटें और टिकट आप हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी है। देश की आधी आबादी की निगाहें आज देश की संसद पर टिकी हुई हैं और वो देख रही है कि क्या भारतीय राजनीति में जिस बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है वो सही मायने में अपने वास्तविक अंजाम तक पहुंच पाएगा। 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है सभापति महोदय, और अनेक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मसला इतने वर्षों से हाशिए पर ही रहा है। ये सच है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संयुक्त रूप से पारित किया है, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी को इस बिल के क्रियान्वयन होने का इंतजार है। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी के राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना उसके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अधूरा है, और इसलिए ये समय की मांग है कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम सब ने मिलकर पारित किया था उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति ये है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं, और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं हैं। और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को
या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। इस परिस्थिति को आखिर हम कब बदलेंगे? आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संसदीय लोकतंत्र में हमारे विपक्ष के मित्रों के अपने कुछ राजनीतिक कर्तव्य भी हैं और उनका कुछ धर्म भी है। तो इसलिए बहुत सारी चिंताएं, आशंकाएं, आरोप प्रत्यारोप और घमासान, ये भी मैंने कल से इस चर्चा में देखा है। एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसदगणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री ने इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसदगणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि ये तो कहीं आप सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका का भी समाधान हमारी सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से यह कहना चाहती हूं कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं। ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है और जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब हम इस लोकसभा की संख्या को बढ़ाएंगे, 816 तक पहुंचाएंगे, तो छोटे और बड़े दल सभी के लिए 33% का जो ये महिला आरक्षण है इसको लागू करना सहज हो जाएगा। इसका भी सभी दलों को ख्याल रखने की जरूरत है। और कुछ बातें मैंने जाति जनगणना को लेकर भी सुनी। इस संबंध में भी सभापति जी मैं कहना चाहती हूं, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जाति जनगणना तब क्यों नहीं कराई, अब क्यों कराई, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ कि जो लोग आज जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वो सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर किसने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था? अध्यक्ष महोदय, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया और जो मसले ये छोड़ कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार संभाल रही है, तो आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है और ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है, आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला। तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है, न राज्य में न केंद्र में। आप जो काम नहीं कर पाए
पाए वो हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने तय किया है। सेंसस एक्सरसाइज चल रही है और इसके आंकड़े, मैं सारी बात करूंगी सभापति जी, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए वो हमने किया है और ये कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही है, ये एक्सरसाइज चल रही है और ये प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे। जो ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो काम नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इनसे कहूंगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे कुछ मित्र ये भी सवाल उठा रहे थे कि चुनावी लाभ के लिए हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो उसके बीच बुलाया है। अध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए और अब कुछ राज्यों के बाकी है और जिन भी हमारे मित्रों को लगता है कि ये काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है, मैं उन सभी मित्रों को यह आग्रह करना चाहती हूं कि आप भयभीत मत होइए, ये लाभ आप भी ले लीजिए। आप भी इस देश की आधी आबादी को यह संदेश दे दीजिए कि ये जो पुण्य का काम इस महान सदन में होने जा रहा है, राज्य और देश के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, आप भी उसके समर्थक हैं और आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से पारित करने में आपने सहयोग किया है, इसको लागू करने में भी आज शामिल हैं। आप भी इसका फायदा उठा लीजिए और इस देश की नारी शक्ति को अंततः उसका अधिकार देने में हमारा सहयोग कीजिएगा। अध्यक्ष जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास इतिहास बनाने का अवसर है, इस अवसर को मत गंवाइए। आइए हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और आधी आबादी को न्याय दिलाते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया चेयरमैन सर। सालों साल से डिमांड थी जो हमारी आधी आबादी है, इसे पार्लियामेंट में गारंटेड रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो 2023 में ही सबकी सहमति से पास किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के मसले पर न ही मुझे और न ही किसी और को एतराज़ है, बल्कि सब लोग इसकी हिमायत करते हैं। सर, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये जो गारंटी पूरे मुल्क के ख़वातीन को देने की बात की जा रही है, लद्दाख के ख़वातीन इससे काफ़ी हद तक महरूम रहेगी, क्योंकि इस बिल में ख़वातीन के लिए जो स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन की बात कही गई है, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। जब असेंबली ही मौजूद नहीं तो रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा लद्दाख के ख़वातीन को नहीं मिलेगी। सर, लद्दाख के लोग काफ़ी अरसे से पीसफुली डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। ये डिमांड हमारे यूनिक कल्चर, इन्वायरमेंट और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सर, एमएचए ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी ताकि केडीए और एपेक्स बॉडी ले की नुमाइंदों के साथ बातचीत हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ये मीटिंग रेगुलर तरीके से नहीं हो रही है। सर, मीटिंग की डेट लेने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक करने पड़ती है। मैं एमएचए के से ऑनरेबल होम मिनिस्टर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इन नेगोशिएशन को टाइम बाउंड तरीके से कंक्लूड करें और लद्दाख की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए, जिससे इस बिल का फ़ायदा लद्दाख के ख़वातीन तक पहुँचे। सर, लद्दाख स्ट्रेटेजिक और जोग्राफिकल दोनों लिहाज से हमारे मुल्क के सबसे अहम इलाकों में से एक है। ये तकरीबन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इस देश के कई स्टेट से भी ज़्यादा बड़ा है।
सर इतने बड़े इलाके के बावजूद लद्दाख के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है। लद्दाख के ईस्ट कोने से वेस्ट कोने तक की दूरी तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर और वेस्ट से और साउथ से नॉर्थ तक तकरीबन 400-500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। टोपोग्राफिकली और मौसमी हालात पर अगर नजर डालें तो ये दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन है। लद्दाख के अंदर सर्दियों में कई माह तक रोड जो है बंद रहते हैं और कई इलाके मुकम्मल तौर पर इनएक्सेसिबल रहते हैं। सर एक सिंगल एमपी के लिए इतने बड़े और डाइवर्स रीजन को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं जोर देकर ये मुतालिबा दोहराता हूँ कि जब भी डिलिमिटेशन हो लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट जो एक लेह के लिए और एक करगिल के लिए ये डिमांड जो है पिछले कई सालों से लद्दाख में होती आ रही है और केडी और एपेक्स के द्वारा हाई पावर कमेटी के सामने भी कई बार ये मांग रख चुकी है। चेयरमैन सर, इस बिल की असली रूह यह है कि खवातीन को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में एम्पावर किया जाए। लद्दाख के खवातीन के लिए तब मुमकिन होगा जब इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और मुनासिब रिप्रेजेंटेशन मिले। सर लद्दाख के लोग सब्र करते आए हैं, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अनशन किया है और हर डेमोक्रेटिक डोर पर दस्तक दी है। अब वक्त आ गया है कि इनकी बात सुनी जाए। मैं वुमेन रिजर्वेशन कि हमेशा से हिमायत में रहा हूं और आज भी हिमायत में हूं। इसके साथ ही मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि लद्दाख के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए, 2 लोकसभा सीट दिया जाए, एक लेह के लिए एक करगिल के लिए। बातचीत को दोबारा से शुरू किया जाए। और सर आज से 1 साल पहले एमएचए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख के लिए कई डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है, जिसके लिए मैं एक बार फिर उनसे शुक्रगुजार हूं। लेकिन अभी तक ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है ग्राउंड लेवल पर जो है अभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट जो है जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्रीज को लेके वहाँ पे काफी हद तक खदशात है लोगों में, खासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। मैं आपके माध्यम से एमएचए से गुजारिश करता हूँ कि लद्दाख के जब ये बाउंड्रीज बनाए जाए उस वक्त एक तो कम्युनल बेस पे ये बाउंड्री ना दिया जाए, दूसरा एज वेल जो डिस्ट्रिक्ट है लेह और करगिल उसका जो बाउंड्री है वो एज इट इज उसी बाउंड्री के अंदर जो है बाउंड्रीज निकाला जाए और जल्द से जल्द जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय श्री हाईबी ईडन जी। Sir, I would like to strongly oppose the Constitution's 131st Amendment Bill 2026, called as the Women's Reservation Bill 2026, coupled with the delimitation drama. Sir, your delimitation agenda, masked as the Women's Reservation Bill, is the loudest political statement by the BJP and Modi government that you have already lost the 2029 elections. You cannot win the game, so you are just trying to change the rules. But we won't let you do that. If women reservation is your niyat, we would like to say that we are ready now here on this very floor, sir. Sir, the present government only has a wafer thin majority. In the last elections, the BJP was not fighting an opposition, but their fight was against the Constitution. The ordinary citizen of this country still believe whenever they fail in the judicial system, whenever they fail in front of the election commission, they rely still on the Constitution of our country. And that Constitution is being tweaked by this government. That is where we are opposing this bill. The bill is a blatant attack on the Constitution of our country. Sir, the bill is a blatant attack on the cooperative federal structure of India. Sir, this is not just a women reservation bill. This is a constitutional redesign disguised as empowerment. The women reservation bill is merely a Trojan horse. Why are we making women
reservation conditional? Why must Indian women wait for delimitation, for a census, for a political process? Empowerment delayed is empowerment denied. If the intent is genuine, why is the delimitation not clearly defined in the bill? Where is the guarantee? Why is delimitation not? Why is the state share of the states remains protected? The Prime Minister of India said that no state will lose its share. Then why is that assurance not written in the bill, not written in the law? Why should we trust him, sir? We were all told that 15 lakh हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. किसी को मिला है इधर 15 लाख? मैं वीडियो भेजूंगा आपको. सर मैं आपको सर मैं आपको व्हाट्सएप कर लूंगा, वो वीडियो भेजूंगा आपको. सर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला काला धन वापस लाएंगे, उसमें से सब बैंक अकाउंट में अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 15 लाख मिल जाएंगे. सर आई विल गिव यू द डिटेल्स. सर so why should we trust him? That is not how democracies work. India made a promise in 1976 that the states which controlled population would not be punished. Sir, that was a promise, not politics. It was fairness. States that invested in education, healthcare and women's empowerment reduced population growth. And today, those very states are losing. Those states which took risk are losing representation. So what are we telling India? That progress will cost you? That progress will cost power? Even Atal Bihari Vajpayee ji understood this danger. That is why the government extended the freeze on delimitation in 2001. So the states that invested in human development would not be penalized politically. That was statesmanship, not strategy. Yes, countries like the United States used the population for representation, but their development and population moved together. In India, development reduced population growth. So applying the same formula here does not produce fairness. It produces an imbalance. Delimitation is not just arithmetic, it's power. It decides who speaks louder in the house and whose voice becomes smaller. And when the power shifts without safeguards, democracy doesn't break one day. It tilts slowly. Do not link women's rights to a process that can reshape the federal balance. Please conclude. Do not make women wait, sir, concluding, for political convenience. Give women representation today. Protect federal balance in law. And do not mix the two, and at the cost of India's future. Support for women's reservation is unanimous, but for the concern for delimitation, sir, is national. Sir, I would just like to conclude with one small example. When these bills are clubbed in a constitutional manner, in 2020, there was a bill introduced in this August House which took away the microscopic minority rights, which was called as an extension of the SC/ST law, but it denied the rights of a microscopic minority called the Anglo-Indian community, sir. Yes, sir, this is a classic example why we shouldn't club these laws together. That is why we are strongly opposing the law and the delimitation and the reservation process. Thank you, Srimati G. Tanuja Rani ji, Honorable Member Shri Haibi Eden ji, you mentioned about 15 lakh rupees, please, and you also mentioned that you will show the evidence. Please provide the evidence, otherwise it will be deleted from the record. Madam, please go ahead. Thank you, sir. ఒక గిరిజన ఆడబిడ్డకి ఈ పవిత్ర మహిళా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సమాజంలో మహిళలు వెనుకబడి ఉన్నారని అనుకునే సమయంలో ఒక గిరిజన మహిళ ఇంకెంత వెనుకబడి ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. అట్లాంటి నేపథ్యం నుండి నన్ను ఈ గౌరవ సభకు పంపించిన గత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అరకు పార్లమెంట్ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశంలో మహిళల యొక్క భవిష్యత్తును మార్చే ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అని చెప్పడానికి సందేహం లేదు. ఎత్ర నార్యేషు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః అంటే ఎక్కడైతే మహిళలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారు. మన సంస్కృతిలో మహిళలను ఒక శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తాము. 33% ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ద్వారా మహిళలకు గౌరవం ఇచ్చే ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మహిళల హక్కుల కోసం తరాలుగా ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మహిళా సాధికారణకు కృషి చేసిన మహనీయుడు రాజ్యాంగ నిర్మాత అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఒక మాట, ఒక సమాజం ముందుకు వెళ్తుందో అంచనా వేయాలంటే ఆ సమాజంలో మహిళలు ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నారో చూడాలి అని. ఈ మహనీయుడి యొక్క ఆలోచనలను ఆచరణలోకి పెట్టిన నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని చెప్పడంలో చాలా గర్వపడుతున్నాను. సార్, మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ని అందించాలనే ఆలోచించడమే కాకుండా 2019 నుండి 2024 వరకు అది అమలుపరిచి చేసి చూపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఒక మహిళను డిప్యూటీ సీఎంగా, ఒక మహిళను హోమ్ మినిస్టర్గా, క్యాబినెట్లో 4 మహిళలను మంత్రులుగా చేసి చూపించి మహిళల యొక్క గౌరవప్రదమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో, సర్వీస్ కాంట్రాక్టుల్లో 50% మహిళలకు అవకాశం కల్పించారు. అంతేకాక మహిళల కోసం అమలుపరిచే సంక్షేమ పథకాలు అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, ఇలానే పేద ప్రజలకు అండగా ఉండి ఇళ్ల పట్టాలు కూడా మహిళల పేరునే అందించిన ప్రజానాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని గర్వంగా చెప్తున్నాను. దిశ పోలీస్ స్టేషన్ని స్థాపించి దిశ యాప్ ద్వారా మహిళలకు రక్షణ కల్పించారు. ఆర్థిక సామాజిక వర్గాలలో మహిళలు బలోపేతంగా ఉండాలని చెప్పి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అమలుపరిచారు. 2019 నుండి 2024 వరకు ఈ పీరియడ్లో మహిళలు స్వర్ణయుగంగా మార్చారు. అంతేకాక మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో, గౌరవంతో జీవించేలా చేశారు. చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. దేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వచ్చిందని మహిళలందరూ ఆనందించే ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు పెరుగుతుందేమోనని ఆందోళనగా ఉంది. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చోట హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 1 మినిట్. నంద్యాల జిల్లా ముచ్చిమర్రి ఘటన వంటి సంఘటనలు నిజంగా బాధాకరం. మరీ ముఖ్యంగా అధికార పార్టీలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు, మమ్మల్ని హెరాస్ చేస్తున్నారు అని విక్టిమ్స్ ఒక మహిళ వచ్చి కంప్లైంట్ చేసినా కూడా పోలీసులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం నిజంగా
చాలా దురదృష్టకరం. అధికారంలో కనీసం ఇట్లాంటి విషయాల మీద అధికారంలో ఉన్న ప్రజా ప్రతినిధులు ఒక అసెంబ్లీలో గానీ ఒక పార్లమెంట్ లో గానీ ఈ విషయాన్ని చర్చించలేదు. కానీ ఈ రోజు సార్ ఒక్క నిమిషం కానీ ఏ రాజాజీ థ్యాంక్ యూ సార్. Sir. Yes, sir. Please carry on, sir. Sir, thank you very much, sir. Since Mrs. Kanimuri Karunanidhi, honorable member from DMK, spoke in detail about the legislative package of these two acts and the dubious measures being taken by the government to push this bill. Please. Sir, you are speaking, sir. It is your turn. Sir. Sir, I do not want to comment more because the exhaustive speech. Sir, how can? No. I have given time to him. He is speaking from your party. Mrs. Kanimuri had made an exhaustive and elaborate speech. So once and again. gave her. No, once again, sir. No, he is from your party. You don't want him to speak. Please tell me. No, please tell me. No. I have given time to him. He is from your party. You don't want him to speak. Whether conclude or not, I will decide, not you. Please. Yes, sir. Yes, sir. House is not in order. No, sir. It is in order, sir. If it is not in order, it is basically because of your own party. Sir, a detailed, elaborative speech that has been delivered by Mrs. Kanimuri Karunanidhi from a party, where she explained the dubious activities, covered these two acts, which was piloted this government. I want to make very small time to exercise my right. Sir, I never intended to take part in this debate, but I took a firm decision. I want to say a few words before this House after hearing the speeches of Home Minister and the Prime Minister. Sir, it is very strange. Two bills having approved by the Cabinet under the chairmanship of the Prime Minister have been placed on the table and it is being under consideration, and both the two exalted executives, none other than the Prime Minister and the Home Minister, completely deviated from the substance and pith of the bill, and they are giving justification on the other diabolical ways. It is strange to the Parliament. Not only strange, I categorically accuse both the Prime Minister and Home Minister and this government together undermine the parliamentary democracy and parliament values. I will explain. Sir, our apprehension is, having heard the speech of the Home Minister, nothing will be done to the Tamil Nadu or southern states. What he says is, sir, our apprehension is Tamil Nadu will be put into trouble. But whereas the Home Minister says there will be an approximate 50% increase. Tamil Nadu suffers no loss. Kerala will have 30 MPs. It is an artificially created apprehension in the mind of the southern states. Sir, the apprehension in the mind of the southern states, not in the year 2010 or 2011 or 2026, the apprehension in the mind of the makers of the constitution itself, north and south divide. Sir, the states were formulated under the statutory provisions of the State Organization Bill. The states were organized by Dr. Ambedkar and other committee on the basis of the linguistic states. I think that I am correct. The states were formed in 1956 by a statutory measures under the guise of linguistic states. When the linguistic states idea was put forth before this parliament, even period 5 years, Ambedkar wrote a very clear book, which was the bedrock and backbone for this act statutory. Sir, thus in that book he says there is a divide of north and south. Sir, Ambedkar says in his book, I quote, the north is Hindi speaking, the south is non-Hindi speaking. Most people do not know what is the size of the Hindi speaking population. It is as much as 48% of the total population of India. Fixing one eye on this fact, one cannot fail to say that the Commission's effort, that is the delimitation committee that time, formulating the states, Commission's effort will result in consolidation of the north and balkanization of the south. Can the south tolerate the dominance of the north? I may now not to be breach of a secret if I reveal to the public what happened in the Congress party meeting when draft constitution in India was being considered on the issue of adopting Hindi as a national language.
There was no article which proved more controversial than Article 115, which deals with the question. No article produced more opposition. No article more heat. After a prolonged discussion, when the question was put, the vote was 78 against 78. The tie could be resolved. After a long time, when the question was put to the party meeting, the result was 77 against 78 for Hindi. Hindi won its place as a national language by one vote. I am stating these facts. From my personal knowledge, as a chairman of the drafting committee, I had naturally entered the Congress party in close. These facts reveal how much South dislikes the North. This dislike may grow into hatred if the North remains consolidated and the South becomes disintegrated, and if the North continues to exercise a disproportionate influence on the politics of India, and I am quote. Sir, this is the disproportionate influence which was attempted by the North on the southern state, not by me, leader M.K. Stalin. It was a statement by Dr. Ambedkar in the committee. So now, in the background, you see the answer given by the Home Minister. Home Minister says, sir, there will be only 50% increase. There will be no damage for Tamil Nadu or Kerala or southern state. Sir, my apprehension is, then why come for these legislations? If the Home Minister is standing before the House, don't worry, I will take off everything. Then what is the purpose of the two bills? What is the two bills says? Section 8 of the new bill says the seats will be allocated on the basis of the latest census. Section, sir, very important. Section 8 says the seats will be allocated on the basis of the latest census. That is the bill introduced in the House. But what Constitution says? Constitution says, Article 81, Clause 2, there will be the number of seats. For the purpose of Clause A1, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the people in such a manner that the ratio between the number and the population of state is so far as the practicable and same for all states. Sir, the word is very important. Ratio between the number and the population of the states. Constitution says ratio of the number between the number and the population of the state. Sir, I do not want to recall all the words of what happened in the constitution of state bills. When we formed the linguistic states, Ambedkar was very clear, according to G.P. Bant and other members, when we are forming the one state, one language, the reason is the language, civilization, culture, and all ethnicity values of the particular state, who speaks one language, who adopted one culture, should be reflected in the assembly. All codification of laws and whatever the rules going to be framed, it should reflect the people of the state, since they are adopting the one language. If it is the collection of the state, is it not fair on the part of the government to take all the wishes of the states from the linguistic states? It should be collected. Please conclude. But whereas Prime Minister says, Home Minister says, don't worry, nothing will happen. But on the other hand, Constitution is against you. The present bill is against you. It is very strange. Number 1 and number 2 of this country is completely misguiding the Parliament with wrong data without any reason. Sir, I conclude, sir. I conclude. In the name of women's right, Prime Minister wants to say we wanted to protect women's right. If anybody opposing this bill, they will be anti-woman. Sir, in the name of the women's right, the government is going to promote discrimination among the states. By the discrimination, you want to promote north-south divide. By this divide, you want to have a perpetual rule in the center. By the perpetual power, you want to establish theocratic state. By theocratic state, you want to impose one nation, one language, one culture. We will not permit your dream to turn into reality. Our state, our Chief Minister will not permit to the Tamil Nadu. We will oppose it. Thank you, sir. माननीय श्री जयंत बासुमतारी जी, आप बोलिए सर, माइक आ जाएगा. धन्यवाद सर, आपने मुझे द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 और द डिलिमिटेशन बिल 2026 पे बोलने के जो मौका दिया. सब मैं बोडो भाषा में बोलना चाहूँगा. गिबियावनो
मानगोनां आफादगिरिनिसिम आङो साबायखर जासियो जे the Constitution 131st Amendment Bill 2026 आरो दा delimitation Bill 2026 नि सायाव बुंनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर बावो। आरोबाव बे मोननै बिलखौ पार्लामेन्टआव दिखांनायनि थाखाय माननीय गाहाय मन्त्रि आरो सरकारनिसिम आंनि आरो आंनि पार्टी UPPL निफ्राय गोजोननाय फोरमायनाय आरो साबायखर थाबाय। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 नि गेजेरजों पार्लामेन्ट आरो स्टेट लेजिस्लेटिव एसेम्बलियाव 33% रिजार्वेशन होनो लानाय थारैनो गोग्गाथाव आरो बरायथावना। समाजनि खावसे सुबुं अनजिमा एबा बिमा माहारिनो दिनैसिम लेजिस्लेटिव पावार होनो हायैया भारत बायदि सुबुं दारा हादोरनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिथावना बाथ्रा। खुंथाय गोहो पजिशन आरो हेंथा गोहो अपोजिशननि बोलायनायनि थाखाय बिमा माहारिया गोबाव सम भुगिनो गोनां जाबाय। अदेबानि गोबावजोंब्लाबो 33% रिजार्वेशन मोननो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय आइजो एबा बिमा माहारिनिसिम आं आरो आंनि पार्टी UPPL नि आफादगिरि माननीय प्रमद बर'नि जानानै कंग्रेचुलेशन हरबाय। लोगोसे हादोर नाङै delimitation बिल 2026 लाबोनायनि थाखाय खेबसेबाव सोरखारनिसिम साबायखर जासिबाय। नाथाय बे बिलनि गेजेरजों सुबुं सानखोखौ बिथा खालामनानै delimitation खालामनो सानोब्ला भारतनि सा सानजा रायजोफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा, जेराव बांसिनानो ST सुबुं अनजिमा दङ आरो बे ST सुबुं अनजिमाया गुबुनफोरनि रुजुनायाव बांनाय हारा जोबोद खम। बिनिखायनो मानोना रिजार्वेशननि कुइसन फैयोब्ला सा सानजा भारतनि आरो सा सानजा भारतनि रायजो आरो बैयाव थानाय फिसा फिसा हारिफ्रा उदांस्रिनिफ्राय दिनैसिम हिस्ट्रिकेलि डिप्राइभ जाबोदों। आं बुंदों हिस्ट्रिकेलि डिप्राइभ जाबोदों मानोना सा सानजा भारतखौ बाथुल फिसा बादि ट्रिट खालामबोनाय जादों। जों जुदि नोजोर होयो सा सानजा भारतआव दिनैबो गोबां हारि मोनगोन जायफ्रा स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि आरो पार्लामेन्ट एबा लकेल बडिफोराव रिप्रेजेन्टेसन मोनबोआखै। बेनिखायनो बै बाथ्राखौ नोजोराव लाखिनानै नर्थ इस्टखौ स्पेसियेलि delimitation बेलायाव केयार होनांगोन आरो कनसिडार खालामनांगोन जाहाथे सुबुं अनजिमाजों नङा बैनि इकुवेल रिप्रेजेन्टेसनखौ नायनानै जाहाथे जोंनि नर्थ इस्टआव सिटनि delimitation खालामोब्ला सिटनि माने अनजिमाखौ बांहोनांगोन। बेनि थाखाय आं सरकारनिसिम दाबि खालामदों खुंथाय गोहो पजिशन आरो हेंथा गोहो गासैबो जाहाथे बे बेलायाव मदद खालामो, कुनु डिबेट बावथे लाबोआ, बिनि थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। माननीय बुंथिगिरि आं आसामनि 6 शेड्युल काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानानै गोख्रोङै दाबि खालामो जानो गोनां delimitation गेजेरजों कन्टिगुइटिखौ मेनटेन खालामनानै बिटिआर हालामाव मोनथाम पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सि आरो खमैनो 30टा स्टेट लेजिस्लेटिभ कन्स्टिटुएन्सि खालामनाय जाथों। बिनि थाखाय गोख्रोङै सरकारनिसिम आङो दाबि दैखांदों। आं आसा खालामो बे दाबिनि फारसे जोंनि भारत सरकारा निश्चय बा हाउसआ निश्चय गुरुत्व खालामगोन। मानोना नर्थ इस्टआ दिनै उदांस्रिनि उननिफ्राय डिप्राइभ जाबोदों जे बेयाव गुबैयै बांसिनै जोंहा ST हारिफ्रा थायो आरो बे ST हारिफोरनि सुबुं अनजिमा बांनाया गुबुनफोरनि रुजुनायाव जोबोद खम। बेनिखायनो गुबुन गुबुन माखासे स्टेटफोर बादि नर्थ इस्टआ सुबुं अनजिमानि बेलायाव जुदि नायोब्ला आरो बेखौ बिथा खालामनानै पार्लियामेन्टारि सिटआनो जा एसेम्बलि सिटआनो जा बेखौ जुदि बारायनायनि थाखाय जुदि राहा लायोब्ला बेयो थारैनो इनाय खालामनाय जागोन। बेनिखायनो आं भारत सरकारनिसिम आपिल खालामदों जेन' बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि सिट बारायनायखौ नोजोर खालामो आरो गुबैयै बिटिआर हालामाव खमैनो मोनथाम पार्लियामेन्टारि सिट आरो खमैनो 30 स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बारायनानै बे दाबिखौ जाहाथे पुरन खालामो बिनि थाखाय आङो भारत सरकारनिसिम गंग्लायै आर'ज खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा बुंनो होनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय। माननीय श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज इस सदन में अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह केवल एक विधेयक नहीं है, ये भारत की लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है। यह उस न्याय की परीक्षा है जिसकी नींव हमारे संविधान में रखी थी और यह उस विश्वास का सवाल है जो देश की करोड़ों महिलाओं के संसद से जुड़ा हुआ है।
सभापति जी, मैं शुरुआत से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और हम इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मानते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और सवाल दोनों साथ चलते हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि आधी आबादी 50% 33% की, उनको बढ़ा के 51% कर देना चाहिए। जब बराबरी महिलाओं को तो सदियों से नहीं मिला, जो वो बढ़ के मिलना चाहिए। सरकार की और हाउस की ये मंशा होनी चाहिए। सभापति जी, लेकिन आरक्षण से पहले सुरक्षा के बारे में तो बताना चाहिए कि एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है। तमाम सरकारों में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, इसका जवाब भी सरकारों को देना चाहिए कि जब महिला सुरक्षित नहीं होंगी तो उनके अधिकार की रक्षा कैसे होगी। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये कोई नई सोच नहीं है, ये उस परंपरा की निरंतरता है जहां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर, फातिमा शेख, झलकारी बाई, मां उदा देवी पासी, अवंतिकाबाई लोधी, मां फूलन देवी जैसी वीरांगनाओं के संघर्ष हमारे सामने उदाहरण है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते हुए कहा था कि हम एक ऐसे संविधान को बना रहे हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार देगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था वो हिंदू कोड बिल था। उन्होंने उसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में बराबरी, गोद लेने का पूरा अधिकार था। और इसके जब वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सभापति जी महोदय, 73वें 74वें संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 243D और 243T में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। आज लाखों महिलाएं पंचायत और नगर पालिकाओं नेतृत्व कर रही है। वो अलग बात है कि बहुत बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती, क्योंकि हमारे समाज ने भी पुरुषों और महिलाओं की बराबरी स्वीकार नहीं किया। कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं पति उनके निर्णय लेते हैं। ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। भाषण चाहे कुछ भी दिया जाए, लेकिन सत्यता यही है। सभापति जी, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इन्हीं विचारों की कसौटी पर अगर वर्तमान महिला आरक्षण कानून को परखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि 33% आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। और यदि 33% आरक्षण दे भी दिया तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि SC, ST और OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कोटे के अंदर कोटे कोई प्रावधान नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आरक्षण उन वर्गों तक सीमित रह सकता है जिनके पास पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच है। ऐसे में दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं जो सबसे अधिक वंचित है वो हाशिए पर रह जाएंगी, फिर से प्रतिनिधित्व से बाहर रह जाएंगी। ये न केवल महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा के भी खिलाफ है। आज जरूरत है केवल आरक्षण देने की नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी आरक्षण सुनिश्चित करने की है। आप तो कोटे में उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात करने वाले हैं, तो महिला आरक्षण में इसे लागू करने के पीछे आप लोग क्यों रह गए? क्योंकि जब तक सबसे वंचित महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आरक्षण अधूरा ही रहेगा। ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई बराबरी, सम्मान और असली लोकतंत्र की है। सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से हो रही चर्चा के बीच एक मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं। सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण ये मांग अधूरी रह गई, क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोकसभा की तरह सभापति जी, राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा की सीटों के लगभग 45% है, इसलिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45% यानी कि लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। सरकार ने अगली जनगणना में, जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, वादा किया था। अगली जनगणना में SC, ST, OBC की जनगणना की जनसंख्या की गणना के बाद अब समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC, ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है। और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो जैसे SC, ST के लोगों को है। सभापति जी, हमारा संविधान कहता है कि प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, साथ ही संघीय संतुलन को भी
भी बना रहेगा। 1976 और 2001 के परिसीमन को रोकने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय यह समझ थी कि अगर केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल, जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे वे नुकसान में चले जाएंगे। सरकार तो कहती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, लेकिन सवाल उठता है क्या इसके लिए सभी राज्यों का व्यापक परामर्श हुआ? क्या कोई सर्वदलीय समिति बनाई गई? क्या राज्यों की सहमति ली गई? अगर नहीं तो ये प्रक्रिया सहमति से नहीं सख्ती से लागू की जा रही है। मेरी मांग है कि परिसीमन से पहले सर्वदलीय समिति बनाई जाए, राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई फॉर्मूला तैयार हो। और मेरी मांग है कि राज्य पुनर्गठन के प्रस्ताव है सरकारों के पास, ये परिसीमन से पहले राज्य पुनर्गठन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रदेशों में उनका भला नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर प्रदेश बनाने के लिए हमें पुनर्गठन के बारे में सोचना चाहिए। सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, महिलाओं का अधिकार है, इसे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। और अखिलेश जी, सभापति जी खत्म करते हुए, अखिलेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, राजनीति में वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका हुआ है। आप देखिए कि दिल्ली की आबादी क्या है और उनको मिल क्या रहा है। हम साउथ के प्रदेशों की चिंता करते हैं, लेकिन क्या ये जो हमारा प्रदेश है, उत्तर भारत है, क्या इधर नहीं देखना चाहिए? अगर हम लोग करीब से देखेंगे अखिलेश जी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ थी उस समय, और 20 करोड़ का मतलब हमें आज 140 सीटें मिलनी चाहिए। राजस्थान के साथ भी छल हो रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी, बिहार छत्तीसगढ़ के साथ भी, हरियाणा के साथ भी, पंजाब के साथ भी। मेरी ये मांग है कि हम राजनीतिक भाईचारा निभाते हुए ये ना भूल जाए कि हमारे प्रदेशों के क्या हाल है। आप समझ के देखिए, एक एमपी कितने क्षेत्रों को कवर कर सकता है? इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं बनी है। तो ये आज आवश्यकता है कि हम उत्तर का भी ध्यान रखें, हम लोग नॉर्थ का भी ध्यान रखें, और ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जिसमें उत्तर प्रदेश का जो 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, अगर ये लागू हो जाएगा तो भी वो 20 सीटों का नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में ध्यान रखते हुए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, और पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। मान्यवर काशी राम साहब अमर रहे। Honorable Minister Shri H.D. Kumaraswamy ji. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me the opportunity to speak in this August House on such a historic occasion. Sir, I have said this before and I say it again today. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is going through a phase of deep and meaningful transformation. We are witnessing changes that will be remembered as defining milestones in our nation's journey. After nearly 75 years of independence, our government has taken a truly path-breaking step by ensuring fair and meaningful reservation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. Today, the world is looking at India with admiration. At a time when many countries are grappling with conflict and instability, India is moving ahead with confidence, driven by reform, stability, and vision. Peace and reform have become the foundation of our growth. What makes me particularly proud is the recognition being given to women's power in the world's largest democracy. Alongside Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat, we are now building a strong and empowered Nari Bharat. To me, a woman represents strength in its purest form. She balances multiple roles as a mother, a sister, a wife, a daughter, and yet continues to be a pillar of support of our society. A woman is not just a role or a relationship, she is Shakti itself. This reservation should not be seen as a favor. It is in fact a recognition, a tribute to the strength and contribution of women in our society. We have all grown up hearing that a mother is the first teacher and that educating a woman is like educating a family. By bringing women into the core of our legislative system, we are strengthening the very foundation of our democracy. On this historic day,
I truly believe the Mother India must be proud of all of us. I am really very happy that the implementation of the Women's Reservation Bill is being advanced and the strength of the Lok Sabha is being expanded to accommodate the women of India. There is a reason for my happiness. It was my party, the Janata Dal, and my father, Sri H.D. Devegowda ji, as Chief Minister of Karnataka, who first conceived the idea of 33% reservation for women in state assemblies and parliament. This was in 1995. He wrote to the then Prime Minister, Sri P. Narasimha Rao ji, about it, and even created a small group of my party colleagues to meet leaders across party lines and canvass for his idea. Sri Devegowda ji became the Prime Minister in 1996 and showed enormous courage and commitment to bring his idea of women's reservation to Parliament as the 81st Constitutional Amendment in September 1996. His effort was ahead of its time. However, the bill lapsed as he did not have the necessary political support to continue in government. He ran a complex 13-party coalition government, which fell. The Congress, which was supporting his government from outside at the time, did not tolerate any of his progressive measures and withdraw support. There is very little difference between the Congress party then and the Congress party now. It has remained obstructionist. The grand old party can never give up on its old ways. Divine play has played me in the cabinet of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji when this historic amendment is being passed. Besides the small fact that it fulfills Sri H.D. Devegowda's dream in his own lifetime, the even bigger achievement is that it fulfills the aspirations of the women of India and brings great joy to half of our nation's population. I thank the Prime Minister for advancing the implementation of this bill and for making all of us in his team a part of history. Let me tell you what has unnerved the opposition about this amendment, especially the Congress. They feel insecure because they are unprepared to handle this massive change, which completely refreshes the Indian political landscape. They have lost touch with the people and do not know how to cope up with this transformation. They have always assumed that minorities and women are their vote banks. But ever since Prime Minister Narendra Modi ji has come to the helm, women in rural areas, among minorities, and in tribal regions have steadily come to believe in his leadership and the delivery capacity of the NDA government. What the Congress could not achieve in half a century, PM and the NDA government have achieved in a decade. Next, I want to address the case being made on behalf of the southern states that they will lose out in this exercise, that they will be overpowered in the heartland. This is nothing but fear-mongering. I have been the Chief Minister of Karnataka twice, and I can say with certainty that the argument made by the DMK is their own. It does not represent the southern states. You should remember that the DMK has historically been uneasy with the Indian state. That has never been the case with other southern states. Sri N. Chandrababu Naidu